Good afternoon students, welcome to the class 5 of capacitance. Today we will discuss some numericals based on grouping of capacitors. As in the previous class, we have derived the derivation for grouping of capacitors and the final formulas are in series the 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 dot 1 by Cn. If C1 equal to C2 equal to dot Cn equal to C say, then C equivalent is C by n. In parallel, the formula is simply the sum of the capacitances. If C1 equal to C2 equal to Cn, then C equivalent parallel is Cn. Using these formulas, also another one formula is there. If two capacitors are in series, we can use directly one formula, that is 1 by C equivalent is 1 by C1 plus 1 by C2 for 2, but more than 2 we have to use this general formula. LCM is C1 C2 plus C1. Then C equivalent is equal to C1 C2 by C1 plus C2. So, using this formula directly also we can find C equivalent series for two capacitors. That means suppose 2 microfarad, 3 microfarad are in series. You can do directly 1 by 2 plus 1 by 3 in this way also, or you can apply this formula directly 2 into 3 by 2 plus 3. So, in one step we can solve the problem. Okay. Basing on this formula, let us solve the numericals one by one. First one I will do, second one you will do. Similarly, we will proceed. Suppose this first question. While solving these capacitors problems, see calmly, okay, just see the circuit and always solve in the manner in such a way that the end A and B should be at the end. सबुबले एमिति भाबे solve करिवो A B टा सबुबले last को रहउथबो जेमति एठी A B माने एगुडा solve हबो एठी A B माने एटा solve हबो एठी A B माने एमती सॉल्व हे आसबो तमे याडो जदी स्टार्ट कर दबो किछ कर परिबनी भूल भाल हे जबो हला सब बेले ए जो एंड ता थिबो सेटा लास्ट को रहइबो तो स्टार्ट कोड होबो तमे जानि जो एंड को आग देखि दलो एठी ए बी अछि एपोटू स्टार्ट करिवो एठी ए बी अछि एपोटू स्टार्ट करिवो एठी ए बी अछि एपोटू स्टार्ट करिवो एठी ए बी अछि माने एपोटू स्टार्ट करिवो सिमिलरली वी विल सी फॉर दिस लेट अस सॉल्व फर्स्ट वन First draw the diagram which is given in the question, then step by step we will solve. Three, just I am explaining, you have to write the unit. 2 3 A B. You see this part, okay, whether this is series or parallel. If ends are different, then it is series. If ends are common, then it is parallel. This is one end, say at a first plate, second plate connected to first plate of second plate of second connected to first plate of third, second plate is connected to another end. That means suppose this end is C, this is D, ends are different, hence these three are series. Let this is C1, C2, C3, C4, C5, C6. So here C1, C2 and C3. So step 1, step wise we will solve. Here
C1, C2 and C3 are in series. But C1 equal to C2 equal to C3 equal to 3. The C equivalent, if all capacitors are same, this is C equivalent 1. 1, 2, final one is C equivalent. If all the capacitors are same, then what is the formula? C by N. C is here 3, N means number. Number is 1, 2, 3. The C equivalent 1 is 1 microfarad. तमें पचारो मैम आमे जेनेराली भी तो करि परबा 1/3 plus 1/3 plus 1/3 आउ दीटा लाइन एक्स्ट्रा हबो दैट इज 3/3 पुणी उल्टेबो 1 एटा हसे सिंपल समान थिले तमे ए फार्मूला यूज करनबो अलगा अलगा जदी थांता एटा 1 एटा 2 एटा 3 ताले तुमको जनरल फार्मूला नबको पड़िबो देन यार शॉर्टकट डायग्राम कोन हबो माने इक्विवेलेंट डायग्राम बर्तन ए तीनटा गोटे हे गला तो एटी कर दउची 3 2 3 3 2 3 दिस इज C5 C4 C6 ए तीनटा बर्तन गोटे हे गला दैट इज C इक्विवेलेंट 1 एटा हला 2 C इक्विवेलेंट 1 केते आसला 1 बर्तन ए दीटा किछि नै गोटे पॉइंट हला तो दिस इज 1 कॉमन पॉइंट एटा गोटे कॉमन पॉइंट ता माने यार गोटे प्लेट एठी को लागि छि यार भी गोटे प्लेट एठी को लागि छि एंड कॉमन हे गला ताले के कहबो एटा कोन एटा हला पैरेलल ओके तो C2 means C4 and C equivalent 1 are in parallel then what is C equivalent 2 C4 means 2 C equivalent 1 is 1 simply you will add 2 plus 1 parallel thile बहुत easy खाली मिसे नबो तो 3 finally you have to write the unit then the C4 and C equivalent 1 becomes 1 then what is the short diagram or next step diagram 3 as usual 2 1 becomes 3 another 3 is there so these 3 are in series so this is C5 this is C equivalent 2 this is C6 first one mu detail le कहूची next को टिके shortcut करबा तो here C5 C equivalent 2 and C6 are in series then final C equivalent different value or same value 3 3 3 same hence it is easy C equivalent is C by N that is 3 by 3 the final answer is 1 microfarad okay again I am telling C1 C2 C3 are in series the equivalent is 1 3 by 3 this 2 and this 1 is parallel 2 plus 1 3 3 3 3 series hence last one is 1 microfarad okay let us do the second one you have to do yourself just I am giving the hints you see here 2 2 and this one is 1 we have to solve from this side these two are series or parallel ends are different hence 2 2 series if 2 2 series then what is the answer 1 the first step 1 is C equivalent 1 is 1 then this one is parallel to this is 1 1 1 2 the C equivalent 2 is 2
then this becomes a triangle. 2 2 series again, ए गोटे ट्रायंगल गोटे कैपेसिटर कन्वर्ट है तापर ए दीटा 2 2 सीरीज हेले पुणी 1 ताले एटा 2 एटा 1 2 1 केते 3 तो 2 2 सीरीज 1 1 1 2 2 2 1 2 1 3 आंसर इज 3 फाइनल C equivalent is 3. Let us go for third. You see the question. Can anyone tell me whether this is series or parallel? It looks like parallel. I think it is parallel or series. Who will tell? Let us draw the diagram. This is A. Eti kichhi nai mane this is a wire. This is first capacitor. This is second, third, fourth. This is A, B. You see, all are 4 microfarad. First plate, this is second plate. Second plate is connected to first plate of second. Second plate of second connected to first plate of third. Second plate of third connected to first plate of fourth. Ends are different. End is not same. Hence all the capacitors are in series, not in parallel. Here all capacitors are in series. Hence C equivalent, find just in one step because all are same. C by N, C is 4, numbers are also 4 and C equivalent is 1. Okay, next go for the fourth one. See the diagram, see carefully. Okay, we will do the diagram. Nine, 9, 9. This is 3. This 9, 9, 9, whether series or parallel, these are the ends. The second plate connected to first plate of second. Second plate of second connected to first plate of third. That means these 3 are in series. Suppose this is C1, C2, C3. Here C1, C2 and C3 are in series. The C equivalent 9 by 3, that is 3. The step diagram. Three, 9, 9, 9 becomes 3. These are the terminals. So whether these two are series or parallel. This one plate is connected to B. यार भी गोटे प्लेट B को लगी ची तमने एटा एंती ही गला एटा A एटा भी A को लगी ची तमने these two are parallel. So C equivalent is 3 plus 3, that is 6. Okay, then go for the next one. Up to 4 we have completed.
Now do the fifth one. You see in fifth one, how many capacitors are there? 1, 2, 3. Also the values are 1, 2, 3. Numbers are 3, values are also 1, 2, 3. Here there is no capacitor. Here also there is no capacitor is there. This point is A. The whole this is A, that this one is common point. This is B. Here there is no capacitor. So this point, the first plate of this capacitor is connected to A. Second capacitor ro bhi gote plate A. Third ro bhi gote plate A point ko connected. Similarly here B. That means here the capacitors are in parallel. Let us draw the equivalent diagram. One, 2, 3. These three are parallel. The C equivalent is, that means this is A, this is B. Just simply add 1 plus 2 plus 3, 6 microfarad. Then go for question number 6. 6 is a very important question. It also comes in entrance examination. See the question carefully. If the capacitors are connected like this, we can simply say series. How many capacitors are? 3. Again 1 is 4. But this connection, this is a wire. This is also a wire. Each value 2 microfarad each. Here the 2, 2, 2 are not in series. Then what? That means suppose this is a point A. This is suppose C, because final one is B. First plate of capacitor connected to A, second plate in this way connected to C. Second capacitor ro eta gote point C, gote point A. यार सेमती एपटू एमिति ए एटा हला सी तमने जदि आको हमें टाणी दबा ए कैपेसिटर ऊपरू जीवो ये मिडिल को आसीबो ये तळु को आसीबो तमने दीज आर कनेक्टिंग वायर दिस पॉइंट इज सेम एज दिस पॉइंट this point is same as this point. Okay, that means here 2 2 2 are in parallel. So what is the equivalent diagram? First time रे तमे solve करिवो, next देखु देखु कहि दबो जे जदि एटी एमती कनेक्टेड थिबो ताले एटा parallel. 2 2 2 2 parallel. 2 2 2 means 6. 6 to series. What is the formula for series? We can write directly 6 into 2, 6 plus 2, 12 by 8, that is 3 by 2 or 1.5 microfarad. Okay, now go for the seventh one. Seventh one is again a very important. Each value is C. In this figure I will draw this one. Here in sixth question only wire is there, but in seventh question 2 capacitors are there. You see here C, here C. That means the diagram is like this.
5 capacitors are there. Each value is C. Then how will do? मैम कौन एटा किछि मुंडरे पशुनी ना. How many number of capacitors are there? You see, numbers are 5. Here a capacitor is there. Here also another capacitor is there. This suppose तमे series parallel को चिंता करो. एटा A को लागिछि, एटा एपडू आ को लागिछि. पुणी एंड अलगा हला. पुणी ए भितर एते गुडे पळे आसुंती. तो एटा सीरीज पैरेलल जदि तुम भाबिबो किछि कर परिबोनी. एटा होछि गोटे स्पेशल डायग्राम एंड दिस डायग्राम इज कॉल्ड व्हीटस्टोन ब्रिज. तमे नेक्स्ट चैप्टर करंट रे पढिबो. एटी कैपेसिटर बदल रे सब रेजिस्टेंस लागिथिबो. सेम वे रे ही सॉल्व करबा. व्हीटस्टोन नेम ऑफ द साइंटिस्ट. व्हीटस्टोन्स ब्रिज. करंट रे एटा बहुत इंपोर्टेंट. कैपेसिटर रे हमें अप्लाई करबा सेम कांसेप्ट. तो एठी मने रखिबो जदि एमिति डायग्राम अछि आर आ अलगा स्टेप्स गुडा भी अछि. हमें करंट रे डिटेल्स रे देखिबा. यार गोटे शॉर्टकट डायग्राम करिवो. तार इक्विवेलेंट डायग्राम. Wheatstone bridge is an arrangement which is done in current chapter and that is used to determine the unknown resistance of a wire. Okay, here just we apply the formula. The equivalent diagram is like this. First draw कर दबो. किछि बुझु न बुझु एटा देखिलो एमतिया चित्र एटा ओडे ड्रॉ करना. एंड गुडारो ना दे दबो ए बी. हला मझिरे भी दिटा एंड अछि. यार भी ना दे दबो. सपोज दिस इज डी, दिस इज ई. से डी एठी भी गोटे अछि. देखो एटा ए, एटा डी, एटा डी दे दो ना दे तो हमें चेंज कर परबा. ओके, ए डी भीतर केते वैल्यू अछि सी. एटी तो सब समान अछि. तमे आखि बुझी कि सी दे देले चलिबो. किंतु जे अलगा वैल्यू थिबो हमें नेमिंग न जानि थिबा माने तो ए और डी भीतर सी, बी और ई भीतर डी और ई. एटा ई हबनी, एटा ए पॉइंट हबो, एटा ई हबो. हला ताले मु कोन नेम देली. ए मझी नाटा रहिबो एटा, एटा एटा डी और ई. एबे ठीक हला. एटा डी और ई, एटा सी. बर्तन ई और एफ, एफ पॉइंट ता जहा एठी एफ, एठी ई और एफ भितरे सब गुडा तो सी. एक्चुअली कोन होची ए जो कैपेसिटर ता ए और ई एटा ऊपर रहिला. बर्तन ए और डी भीतर रहिला एटा हला. देन ए जो कैपेसिटर ता एटा को भी कॉमन, एटा को भी कॉमन. 1 2 एटा नाही, एटा एफ ता जहा बी ता हला. ता माने एटा बी हला. तो ई और बी भीतर रहबो सी. जदि एठी रहबो ये पुनी एक्स्ट्रा हे जिवो 5 टा. 1 2 3 4 5. ए डी सी ऊपरटा हला ए ई, मझीटा हला सी डी ई बी कोटा ई बी सी. तलटा हला डी बी. आउ थर कहूची देखो एंड हला ए बी हला. मझिरे मु दिटा ना दे देजी डी आउ ई. एई जो कैपेसिटरटा एई पार्ट रो भी अछि, एई पार्ट रे भी अछि. सेटा एट मझिरे रहइबो हला. बर्तन देखो ता माने यारो डायग्राम जहा सेटा तहा एमती तीनटा अछि. एठी गोटे रहिला, एठी गोटे रहिला.
हैला एई कैपेसिटरटा एई पार्ट रो भी कॉमन एई पार्ट रे भी कॉमन देखो बर्तन एई कैपेसिटरटा एई पार्ट रे भी कॉमन एई पार्ट रे भी कॉमन तो बर्तन चित्र भितर टिके आइडिया आस जाइथिबो ए दीटा एमती रहिछि ए दीटा एमती रहिछि ये मझिरे अछि तो ए दीटा जहा एटा ताहा ए दीटा जहा एटा ताहा ओके बर्तन जो डी ई रहिला एट रहिला जोटा पीटील रहिला बर्तन आपको सॉल्व करिया पुणी केमती यार गोटे फॉर्मूला अछि जे ए वैल्यू और ए वैल्यू रो रेशियो एटा को रजिस्टर रे पी क्यू आर एस को आ जाए P by Q equal to R by S जदि हबो ताले आमे कहबा द ब्रिज इज बैलेंस्ड द ब्रिज माने रेजिस्टेंस रे द ब्रिज इज बैलेंस्ड here or C तो no problem C by C the P instead of P this is C माने अलगा वैल्यू की ताले रेशियोटा समान हवा को पड़िबो सपोज दिस इज 2 दिस इज 4 तो 2 by 4 इज 1 by 2 तो एठी भी से जो रेशियोटा देउथबो समान ही दबो तो C by C 1 equal to 1 then this capacitance is ineffective this one is ineffective एटा केमती होची कोन होची हमें किरचॉफ्स लॉ रे पढिबा जस्ट टाइमिंग वी हैव टू रिमेंबर दिस वन इज इनइफेक्टिव माने ये रहिबा जा न रहिबा ताहा ताले कोन आसबो इनइफेक्टिव टा आउट के आगु गले भी हमें क्लियरली बुझ परिबा तो मिडिल टा को उठे दियो तो रिमेनिंग 4 आ केतरा रहला चारटा मझिटा थिबा तो C these two are in series यार गोटे प्लेट या को लागि छि यार गोटे प्लेट एठी लागि छि सीरीज CC सीरीज हेले केते हबो एटा CC सीरीज हेले केते 2C नुह केते C/2 एटा भी CC केते C/2 you have to write CCR in series this CCR also in series so C/2 are in parallel C/2 final answer is C/2 plus C/2 that is C आ गोटे ट्रिक होची विस्टन ब्रिज कांसेप्ट माने एई भलिया जदी थिबो डायग्राम ताले तमरो इक्विवेलेंट ता भी सेतकी ही रहइबो माने कर C बदल रे 2 2 2 2 थांता 5 टा ए भलिया डायग्राम हेगी नु कह देबो 2 ही जदी 2 3 मार्क्स पड़ला तो यू हैव टू सॉल्व बेसिकली एटा तमर एंट्रेंस रे आसे आ काउंसिल रे यार रेजिस्टेंस प्रॉब्लम ता आसे ओके सिखितिले जोथरे भी अप्लाई कर परबो बटन सॉल्व योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व solve again I am drawing A B किए से बुद्धिमान कहबो यार आंसर केते बुद्धिमान ना बुद्धिमती के कहबो तीनटा लागि छि देखो ए आडू तो इजी अछि ए दीटा गोटे पॉइंट को लागि छि बर्तन एटा एठू लागि छि या सते या गोटे लागि छि यार गोटे प्लेट पुनी एठू लागि छि ए माने सब बी को लागि छि एटा गोटे ट्रिकी क्वेश्चन ए जो कैपेसिटर टा फर्स्ट प्लेट एपड़ इमिति बी को लागि छि यार सेकंड प्लेट को भी बी को लागि छि
दीटा जाक कैपेसिटर रो एंड जदि कॉमन हे जिवो माने ये आज के एठी लागि गला ताने पोटेंशियल डिफरेंस ही रहइबनी पोटेंशियल डिफरेंस जदि रहइबनी एटा इनइफेक्टिव ता माने से रहिबा जहा न रहिबा ताहा तमे बसी की सी सी सीरीज सी सी पैरेलल एंदी करथु बहुत समय पळेबो तो चिंता करियो कोठी टर्मिनल गुडा लागि छि एटा एका पॉइंट हेला माने हटे दबो तो एटा हला सी एटा भी हला सी तो सी सी पैरेलल तो सी इक्विवेलेंट इज 2c do the question number 9 yourself Nine is homework for you. Do yourself. Let us see some more questions. Obtain the equivalent capacitance for the net. That 9 was home task for you. This also see some more questions. I will just give the hints. You do yourself. 200 pf सब म्यू एफ रे करथुलो बर्तन pf कोन आसला pf प्रोविडेंट फंड की pf कोन रे के कहबो पिको फैराड p means pico so here is c2 and c3 are in series this is parallel to c1 पाटी रे ही जीवो 200 series हेले आंसर 200 by 200 100 parallel again 200 into 100 and 100 are series so 2 1 suppose you think 2 or 2 and 1 just 0 put कर दबो 2 into 1 by 2 plus 1 2 by 3 आदिटा 0 multiply कर दियो साइड रे आंसर लिखा है जी 200 by 3 pf is your provident fund एटा मैं ऑलरेडी कर देइची 999 series 9 by 3 is 3 parallel 6 एटा किए कहबो देखो सब बेले एंड एठी एंड होची ए डी ए पार्ट को सॉल्व करिवो 8 8 8 8 चारटा 8 अछि मझी दिटा 8 सीरीज हेले 4 पुनी 8 4 8 तीनटा पैरेलल जस्ट ऐड करनबो 8 plus 8 16 plus 4 20 8 पुनी दीटा पैरेलल 12 8 केते 20 सीरीज 20 मैच नुह 20 सीरीज 20 केते 10 5 आउ थर कहूची 8 सीरीज 8 by 2 4 8 4 8 पैरेलल हेले ऐड कर दबो 8 plus 8 16 plus 4 20 again 12 8 पैरेलल 20 केते सीरीज हेले 10 पुनी 10 सीरीज 5 okay again some more problems are there do yourself if any doubt ask me then next we will go for very important part of capacitance energy stored in a capacitor very important 3 mark question it comes in every alternate years energy stored in a capacitor energy stored in a capacitor. How a capacitor gets charged? Suppose this is a capacitor. Na capacitor केमती charge हुए? If you connect to a battery, then the battery performs work. That means चोर मान को चेंको देवा लेडा को लगे दो चार्ज कर दो देंगे जगे दो तो चार्जिंग पूरा आसीबो तो
पनिशमेंट दियंती देखिथि आ पार्टी करथुए या द्वारा करा जाए हाई कैपेसिटेंस नेबो कनेक्टेड कर दलो चार्ज हे जिवो केमति चार्ज हुए सपोज दिस इज ए कैपेसिटर बैटरी कनेक्टेड करो पोटेंशियल डिफरेंस इज बी बैटरी माने तुम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करजो बर्तमान या पाखरे किछि भी चार्ज नाही कैपेसिटेंस सी इनिशियल देयर इज नो चार्ज नाउ दिस बैटरी परफॉर्म्स वर्क ये वर्क करिवो पोटेंशियल डिफरेंस दिया होची तमे जानि छ v इक्वल टू w by q तो w इक्वल टू v into q तो ये भी वर्क करिवो एथरे चार्ज स्टोर करिया पई इनिशियली किछि बैटरी कनेक्शन हेइनी चार्ज केते अछि बर्तमान या पाखरे किछि चार्ज नाही नल तो मते शॉक देई थांता चार्ज केते 0 इनिशियल चार्ज इज q इनिशियल धरो इज 0 पूरा चार्जिंग हे गला इट इज फुल्ली चार्ज्ड देन q फाइनल इज q ये कोठु चार्ज पाइला ये बैटरी चार इलेक्ट्रॉन दौनी बा किछि चार्ज दौनी ये टाणुची ए बर्तमान ये न्यूट्रल प्लेट ये भी न्यूट्रल ना न्यूट्रल माने इट हैज नो चार्ज देन दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ये पॉजिटिव आड़ को के आसीबो नेगेटिव आसीबो एई प्लेट रो इलेक्ट्रॉन गुडा याड़ को आसीबे एंती फ्लो हेबे एठी आसी रहबे ता माने ये हबो इलेक्ट्रॉन लूज कले पॉजिटिव हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ी जे गोटे बॉडी न्यूट्रल अछि सेतरु नेगेटिव चार्ज जदी पळेबो ताले पॉजिटिव चार्ज डेवलप होबो तो जेतिकीटा इलेक्ट्रॉन एठु पळेला सेतिकी इलेक्ट्रॉन एठी आसी जमा हबो तो ये जेतिकी प्लस हबो ये सेतिकी माइनस हबो बुझी होची ना नाही दिस बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस मींस हमें पढ़िबा आगो को इट इज आल्सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन सम वर्क पोटेंशियल यू नो डेफिनेशन V equal to W by Q, the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point. That means work is there and work is done by the cell. It pulls electron from one plate and stores in other. एठु जेतिकिटा इलेक्ट्रॉन सेतिबा हमें चार्ज कहूचे प्लस Q माइनस प्रैक्टिकली एटा होचे हमें जो इंडक्शन ए सब कहूचे जस्ट क्लैरिफिकेशन पाए किंतु प्रैक्टिकली ए जिंस होची ए पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करले एई प्लेट रु इलेक्ट्रॉन एई प्लेट रे जमा होची ये जेतिकी इलेक्ट्रॉन लॉस करिवो सेतिकी प्लस हबो ये सेतिकी माइनस हबो तो इनिशियली केते थिला 0 फाइनल केते q बर्तन ए 0 रु q चार्ज स्टोर हैला भितरे केतिकी वर्क होची हमें बाहर करबा सपोज 0 रु q गला बेले जे कोन से गोटे इंस्टेंट रे चार्ज अछि q व्हाट इज q इनिशियली चार्ज इज 0 लेट q बी द charge present on the capacitor at any instant then at that instant potential difference or potential say V dash because V is the final potential then V equal to Q equal to CV V equal to Q by C so Q by C is capacitance V is the potential difference here at that instant initially potential is 0 suppose 10 volt देउचे middle रे कोठे 4 volt तो होतबो सपोज से 4 वोल्ट भीतर किछि चार्ज अछि फुली चार्ज हेइनी जे कोन से मिडिल इंस्टेंट रे में नै छै तो से इंस्टेंट रे पोटेंशियल हला q by c q रु सपोज dq चार्ज स्टोर होछि dq माने q प्लस सम dq तो सेत पे वर्क केते हबो dw तो कोन लिखिबा लेट dw be the work done to store dq charge so what is the formula of work v into q
तो इंस्टेड ऑफ W dW, इंस्टेड ऑफ V डैश, इंस्टेड ऑफ Q dQ. बुझे ना नहीं. इनिशियली देयर इज नो चार्ज. 0 रु कैपिटल Q हला भितरे मझरे गोटे पॉइंट रे चार्ज हला स्मॉल q. तो से इंस्टेंट रे पोटेंशियल हला Q by C. Q रु dQ चार्ज स्टोर हेबा पई वर्क हला dW. देन dW इक्वल टू V डैश इनटू dQ. तो V डैश जगह केते लिखिबी Q by C, Q by C into dQ. Okay, then just integrate it. Total work done. Total work done to store charge Q from 0 to Q. Just integrate. Integration dW 0 to W, 0 to Q, Q by C dQ. Here what is constant? C is constant. 1 by C, 0 to Q, Q dQ. Okay. What is the formula of Q dQ integration? Q square by 2. You know the formula integration, remembered or not? Integration of x to the power n dx is x to the power n plus 1 by n plus 1. Here instead of x, q is there, power is 1, n जगह 1, तो केते आसीबो q 1 plus 1 by 1 plus 1, 1 plus 1 by 1 plus 1, that is q square by 2. Okay, 1 by c, q square by 2, 1 by c, limit is there 0 to q, 2 common बाहर कर दियो, 2c, q square minus 0. A small q जगह capital Q, upper limit minus lower limit. Integration of dW is W. W equal to q square by 2c. This work is stored as in terms of energy called energy stored. This work is stored as energy. U is energy. Energy stored. Then U equal to q square by 2c, or U equal to also we can write 1 by 2c, instead of q, c v, c square v square, c cancel, U equal to half c v square. These two are the formula. Another one formula is also there. We can write also U equal to half q by c into q. Q square is there, q into q by c. Q by c kete? Q equal to cv. So q by c kete? V. So we can also write half V into Q or Q into V. Basically यही formula सब बड़े यूज हुए. C दे देती वो V दे देती वो energy stored बाहर. हेला, this is the 3 mark question. Derive an expression for energy stored in a capacitor. U equal to half CV square. Another thing is there, energy density. Energy stored by volume. You do yourself. Energy stored is half CV square, then volume. Volume of the capacitor. U is half CV square.
Write down energy density. Energy by volume. For parallel plate capacitor, C is epsilon 0 A by D. V equal to ED, E equal to V by D. Then how? U equal to half, instead of C, epsilon 0 A by D. Again, in terms of V, ED, ED square, E square, D square into epsilon 0 A by D. 1 D cancel. So half epsilon 0 A D E square. एटा हला एनर्जी. वॉल्यूम डिवाइड कर देले ही जीवो. Volume is A, area of cross section, into distance D. So energy by volume is called energy density. This comes as 1 mark question. Half epsilon 0 E square. SI unit of energy density, energy by volume, joule per meter cube. Energy density is generalized as energy per unit volume of the field. That means actually in a capacitor the energy is stored in the form of electric field. We are telling that energy is actually in a capacitor charge is stored. In terms of charge the formula is q square by 2c, and in terms of electric field this is half epsilon 0 E square. Then next we will discuss energy stored in series combination of capacitor.